today is that these are the things going to change the face of Indian agriculture school. If not today, it has to happen. The reason behind is that we know today everyone talk about the health issue of our land. If the health of the soil has to be changed, then what Mr. Manoj and Rohit is talking today for inspiring the farmers to adopt the organic agriculture has to take place too. So they are the people devoted their life for decades. And once you go to their website, their work, see, no man can do that unless you are that passionate about what you are doing. And organic agriculture, is a challenge for anyone. But they have very, strongly demonstrated it is possible, it is viable. And the projects they have done is wonderful. I wish to hear from them than me explaining what they are doing. So let us hear to them, and we welcome both of you, and we are sure you will be an inspiration for our content writers to inspire the coming generations to look for a better opportunity in organic agriculture. Welcome. Thank you. So I think Mr. Rohit, you can just introduce. After that, Manoj can give the big. Thank you, sir. Dominic, sir. This was an amazing welcome, and I see the kind of welcome which we have received today. I probably thought we'll have 2 film stars. You're better than film stars, sir. No, this is really touching and okay. So in the hall, the better speaker than me is Mr. Menon. So I will not take much of time, and I would like to pass it on directly to Mr. Menon. But before we do that, means of course this the organization from which we come. This is International Competence Center for Organic Agriculture, and the organization's mandate is to work into organic agriculture, work across organic value chain, and promote organic farming across the country. And this is what we have been doing since 2004, the inception of the organization. We have been, as I mentioned, that we work across organic value chain means that we work with the farmers and farmer groups, and currently we are in 24 states. We have mandated and we have implemented projects on organic adoption and certification in 24 states, which includes the passing on the production related technologies, means how to go organic, the direct hand holding to the farmers in different states on a crop centric means project mode. This is what we have done, and also to handhold them to get into the required organic certification. Means it can be third-party certification, it can be PGS program, participatory guarantee system, which I think you all know. There are different kind of organic certification programs which are being implemented in the country. So depending on the need of the farmer, depending on the need of the crop, means whether it has to be, the project has to be an export-oriented project, or it will have, like for example, vegetable and more majorly the perishables. We are trying to cover the BGS, so because there is a domestic market of the perishables in the country. So this is what we have done. And another very, very important part is connecting these organic projects to the markets. That is where we have contributed. The organization has contributed a lot. And since 2005, when we understood that there is a need to create a market platform, and we started under the leadership of Mr. Menon. This India Organic Trade Fair was, the first India Organic Trade Fair was organized in Bangalore in 2005. I think I'm correct, sir. Yes. So then afterwards there was no looking back. Year after year we have been, that became an annual event, and this also got merged with an international program also. So that organic platform also has been understood by ICCOA
as the need to promote organic sector, and which is also happening. And parallelly, not only the international or national events now we are doing, we have also been associating with the state governments, different state governments, and we have been for this marketing thing, we have been connecting and organizing events with the states at the regional level, at the state level, regional levels. Because you know that normally the international trade fairs, etc., they are on that B2B format. But we understood that B2C and B2F are also very, very and equally important. So that's how we did all that since 2004. And since 2004, Mr. Manoj Menon, who is a celebrity here, you can see. So he has been leading the show. With all the new programs, all the new ideas, converting those ideas into new projects, etc. So this is happening, and so I request Mr. Menon to come onto the stage. And thank you. I'm really overwhelmed. It's so nice of you. This kind of a welcome is very rare to see. क्या वैसे मुझे किस लैंग्वेज में बोलना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों चलेगा मेरा? आप लोग तो सारे जर्नलिस्ट टाइप के, तो मैं मिस कर सकता हूँ। मॉकटेल, यस, कॉकटेल का टाइम नहीं हुआ तो गुड. So, Robin sir, first of all, I'm absolutely pleased and also happily surprised actually to see the whole establishment that you have got. I think your name is perfect, Dominic. Very dominating in your area of work. You are absolutely hands-on with things. With the last about 40 minutes, 45 minutes of interaction with you, I found what how visionaries are made of. It's not easy to create a media house that also in agriculture. मतलब खेती बाड़ी में जहाँ कहते हैं कि किसानों को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो इलिटरेट होंगे, उन्हें इसमें क्या इंटरेस्ट होगा, ऐसे एक सेक्टर में आपने 1995-96 में इस तरह की पब्लिकेशन हाउस शुरू किया, वो भी केरलाइट होके हुए आपने दिल्ली में हिंदी भाषी लोगों के साथ तहरीर शुरू की. आपने तो सारे यू हैव fought against all odds it seems, and you also proved that against all odds things can be done. So first of all, a round of applause for our Dominic. And yeah, thank you. तो मैं शुरुआत करूँगा थोड़े सा अगला 8-10 मिनट ये बताने के लिए कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, थोड़ा सा इस तरह से कि आप लोगों में शायद एक छोटा सा if I can ignite a spark, maybe a lot of writings and working that you are doing in agriculture sector, a part of it may move to organic and sustainable farming system. So if that is an objective done, my day is done. Because the International Competence Center for Organic Agriculture, ICCOA, like my colleague Rohitash Gakkar is a long name, so we call me sometimes Rohit. Because अगर मैं 4 बार उनका नाम दूंगा तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा. तो रोहित बोलते से हम समझ जाना कि जैसे उन्होंने बताया ICCOA के बारे में, जब 2004 में हमने शुरू किया तो थोड़ी बहुत साफ की तरह ही हम वी स्टार्टिंग ऑफ ए सेक्टर जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस था. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अच्छा वो जो केमिकल के बिना करते हैं ना, वही ना, only that much. But in the last 18 years, now you say organic farming and people will give you a lecture. That much of awareness has come. अच्छा वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, आप कुछ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, people know at least bits and pieces are there. The whole, it's like a jigsaw puzzle. Some pieces are missing, but most of the pieces are in place. So that kind of a sector it is now. I try to put some pieces back there so that you can see a little bit of a picture. See, organic farming is one of the closest to sustainable farming system. It is not same, it is not equal, but it is very similar, it is equivalent to sustainable farming system. और sustainability एक ऐसा umbrella है जो आज हर सेक्टर में व्याप्त है. चाहे आप इंडस्ट्री उठा लीजिए, आप एनर्जी को ले लीजिए, आप
किसी भी और इंडस्ट्री को लीजिए आप, सस्टेनेबिलिटी इज द की. तो एग्रीकल्चर सिस्टम्स आर आल्सो नीड टू बी सस्टेनेबल. जो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर 1965 से शुरू हुआ, इट हैज डन वंडरफुल, नो डाउट अबाउट इट. बिकॉज 1965 से पहले इंडिया वाज फूड इनसिक्योर, लोगों को खाने के नहीं थे. आई मीन एवरीथिंग यू नो वाज फूड वाज आल्सो इंपोर्टेड. ऐसे टाइम में जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके बाद के हर दशक में 100 मिलियन टन बढ़ा. So you can imagine from around 40 million tons then to 140 million tons to 240. Today we are sitting at around 300 million tons. From 1994-96 it has started to plateau. And in 1994-96 तक इंडिया ऑलमोस्ट फूड सिक्योर हो चुका था. तो आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी आर मोर और लेस टेकन, लाइक सर ने करेक्ट किया था, नॉट मोर और लेस एक्चुअली टेकन केयर. नाउ फूड इज देयर. इन फैक्ट फूड इज सरप्लस. अगर कहीं पर फूड नहीं पहुंच पा रहा है, या लोग आज भी अगर कहीं स्टार्वेशन हो रहा है या हंगर हो रहा है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए प्रोडक्शन प्रॉब्लम. फूड कहीं प्रोड्यूस हुआ है लेकिन उन तक पहुंचा नहीं है, तो इट्स लाइक ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. और अगर प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन है और हम आप पॉलिसी मेकर्स प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देंगे, तो इट विल बी लाइक इन इंग्लिश जैसे ना बार्किंग ऑन द रॉन्ग ट्री. प्रॉब्लम कहीं और है, आप कहीं और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें. अब जरूरत क्या है? इस समय जरूरत है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो वी हैव टू मूव फ्रॉम ए फूड प्रोडक्शन regime to a nutrition regime, a regime which will address nutritional issues. Good food. मैं अपने प्रेजेंटेशन में नाम हमेशा दिखाता हूँ, फूड प्रोडक्शन, फूड इज वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ हेल्थ. अगर देखिए इस देश में, और आज हम भारत को क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर टू बी इज बिकॉज वी हैव ए वेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पीपल इन द वर्ल्ड, and therefore we have the largest workforce. We can produce, make in India, this, that, and everything, because we have a young, healthy people. But if that health is compromised, what is asset can become a liability. For a product to move from asset to liability, one tinkering is enough, and health is a very important part of that. तो फूड प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाते हमने ऐसे फूड भी प्रोड्यूस किए हैं जो originally not very safe, especially if they are laden with pesticides, toxicities. So some of the foods, as you know, are carcinogenic. You have already heard about this milk Menon creation. You heard about this Cancer Express. आमिर खान का जो शो था आपका सत्यमेव जयते, वो भी हम सब लोगों ने देखा हुआ है. तो we are all aware of how food has two sides of the same coin. That on one side food gives health, but on the flip side, the food is also making you sick. So what organic agriculture provides is that your food is healthy, that it will give you food that nourishes. तो ये बहुत जरूरी है. ऑर्गेनिक फूड का सबसे बड़ा बेस वही है. तो ऑर्गेनिक फूड को समझने के लिए हम इस तरह से देख लेते हैं. 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सस्टेनेबिलिटी की जो ऑर्गेनिक फूड देता है. एक तो सेफ फूड देता है, दूसरा देता है सेफ एनवायरनमेंट. क्योंकि अगर फार्मर्स कई सालों से, 60-70 सालों से जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उससे सॉइल इज बिकमिंग डिटीरियोरेटेड एंड आल्सो द ग्राउंड वाटर. सो द इकोलॉजिकल इम्प्रिंट जो वो छोड़ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज नॉट सो गुड, दैट्स बैड. तो इसीलिए ऑर्गेनिक फूड विल ब्रिंग सॉइल एंड वाटर बैक टू ए गुड कंडीशन. एंड द थर्ड इज फार्मर्स इकोनॉमिक्स. कई जगह हमने देखा है कि फूड प्रोडक्शन तो भारत का बड़ा, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी हुई है, लेकिन फार्मर्स की कंडीशन ऑन दैट प्रो राटा बेसिस हैज नॉट इम्प्रूव्ड. फार्मर्स आर इवन टुडे मेनी ऑफ देम आर impoverished. They are not what, you know, we in urban pockets, we have our aspirations. We need to have a great life. कार चाहिए, नया बाइक चाहिए, हमारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूलों में जाने चाहिए. Same aspirations farmers को मिलने चाहिए. Rural India is not another India. It is actually the real India. तो अगर वो रियल इंडिया को एड्रेस करना है तो फार्मर्स की इकोनॉमिक्स को एड्रेस करना पड़ेगा. They need to be, if not at par, I mean ideally at par,
but definitely much improved. And that's where chemical farming में क्या हो रहा है? The cost of cultivation is so much that in spite of the best effort they have put in, just from the income of the farm, they are not able to make money because already the cost of cultivation has gone so much back. Organic farming provides you an alternative, the farmers an alternative, that the cost of cultivation can come down. Not immediately, that's the challenge. It takes around 3 to 4 years for the soils to become really healthy. लेकिन उसके बाद cost of cultivation gradually कम. आपने जो economics पढ़ते हैं आपने classical scissor को सुना होगा. The cost of cultivation कम होगा और net income बढ़ेगा. So there is a point where the net income keeps on improving, and that is where the organic farming starts to operate or brings that stage of operation. So that's where ICCOA as an organization is working to bring awareness. कि organic farming, it is not like tomorrow morning is going to happen. It will take some time, and it is also science. कई बार organic farming को हम confuse करते हैं philosophy से. जैसे हमारे ऑफिस में आप कम से कम साल में 2 या 3 IT लोग आते हैं जिन्होंने यूरोप में 4-5 साल किया, यूएस में काम करने के बाद आने के बाद कहते हैं मनोज जी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, हमने 5 एकड़ जमीन खरीदा है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग. For them it's a very romantic idea. Organic farming, wow. It's like करण जौहर की मूवी देखने जैसा लगता है कि एट द एंड में ट्रेन जा रहा होगा वो भाग के हाथ पकड़ लेंगे. ऐसा होगा नहीं. ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना इजी नहीं है. तो मैंने कई बार नॉट डिस्करेज बट आई पुट ए लाइन ऑफ कॉशन कि जो आपने यूरोप के एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के किया है उतना आसान ये है नहीं. उसमें आपने जो पैसा बनाया है वो इसमें डूबने वाला है. It's going to be that way. But if you do not, अगर आपने विज्ञान और साइंस का दामन नहीं छोड़ा और आपने मेहनत भी की तब जाके ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मॉडल बनेगा. You need to put that effort. डॉक्टर से पूछिए कि कृषि जागर में कैसे बना. आज जो आपको एयर कंडीशन चैम्बर और इतनी ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वो कल का बनाया हुआ नहीं है. शायद 20-25 साल के मेहनत के बाद ये बना होगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग में 20-25 साल नहीं लगेगा, वरना आप इसको करेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा. तो लेकिन 4-5 साल की सतत मेहनत से ये मुमकिन है. ऐसा कुछ देखना आप चाहते हैं तो एनी ऑफ यू हु हैपन टू ट्रैवल टू बैंगलोर, स्पेशली आप और मैडम शी इज मिसिंग शनि मैडम, शी हैज गॉन टू फॉर सम पर्सनल वर्क. तो आप में से और जो भी आपकी टीम में से बैंगलोर की तरफ आते हो या तमिलनाडु, द फार्म इज लॉजिस्टिकली इट इज इन तमिलनाडु बट इन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका तमिलनाडु. दिस इज फार्म यू कैन कम एंड सी. We have a very integrated farm there, organic farm, where it is certified since 2015, so it is in the 7th year. Everything, not a pinch of any pesticides or chemical has entered in the last 7 years in the farm. Mango orchard है, 1 एकड़ में पैडी है, 10-12 गाय है, पोल्ट्री का एक यूनिट है. उसके अलावा वेजिटेबल्स, हम सीजनल वेजिटेबल्स को रोटेशन में लाते हैं. जहाँ पर ज़्यादा शेड है मैंगो के अंडर में वहाँ टर्मरिक ग्रो करते हैं. केरला के फेमस चिल्ली होता है, बर्ड साइज चिल्ली, जिसको कांदारी कहते हैं. आपने किसी कांदारी का वर्ड यूज नहीं किया था. तो बर्ड साइज चिल्ली का भी वहाँ पर कल्टीवेशन होता है. एंड वी हैव वेरी वेरी हॉलिस्टिकली इंटीग्रेटेड फार्म. एंड अराउंड दैट फार्म वी हैव अराउंड 65 अदर फार्मर्स whom also we have trained. We have small training hall and a conference facility there. उन्हें ट्रेन करके हमने उन्हें भी ऑर्गेनिक किया है. उन किसानों से हम हफ्ते में 2 दिन उनके प्रोड्यूसर्स को we pick it up from their farms and then bring it to Bangalore and do a supply chain management, marketing. उस तरह की चीज भी कर रहे हैं. वहीं पर हमने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, कोटा के फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी. उसका नाम भी हमने we call that JAP, जैविक एवं प्राकृतिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जिससे कि सेट ऑफ फार्मर्स कैन अडॉप्ट. जैविक खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग बढ़ते समय अगर वो प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं, जो नेशनल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट कैन ऑल्सो बी फॉलोड. Now rather than I keep on talking about ICCOA and organic farming, I think I just pause. If there are some questions, if they want to interact, that perhaps will be interesting. About me, I am also from an agriculture background.
I did my BSc Agriculture some 28 years back from Gujarat Agriculture University. And then later I did my MBA from Faculty of Management Studies, Delhi University. But that is after 8 years of working on farms and plantations, including on a farm very close to where Dominic comes from in Idukki. But also I worked in Tirunelveli, and I worked in Samalka in Haryana on basmati rice. I worked in Sihor in Madhya Pradesh on wheat, sugarcane, and some horticulture crops. So I had the opportunity to work in different parts of the country, from Haryana to Punjab to Tamil Nadu, Madhya Pradesh to Kerala, and now in Bangalore. मैं काफ़ी पला बड़ा दिल्ली से हूँ, आपको मेरी हिंदी से पता लगे और मैं बैंगलोर का हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन I was brought up and studied in architecture and Kendriya Vidya also, just to give my background. And yeah, so very happy to be around here and in midst of journalists and writers and content people. So please, if there is anything that you want to ask. Thank you. Thank you so much for your valuable insights, sir. On behalf of Krishi Jagran, I thank Mr. Menon and Mr. Dakhar for taking out time from their busy schedule to come talk to the KJ team. Thank you so much to both of you. We will now end KJ Chopal